वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको एक प्लगइन दिखाई दे रही है रिप्ले सोर्स 1.7.0। इसे हमें डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, इनमें से जो तीसरा वाला ऑप्शन है विंडोज वाला ये ऑप्शन है, क्योंकि हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो हम इसे यूज करेंगे। ये वाला ऑप्शन है
request the teams to please come a little closer to the grandstand. Ladies and gentlemen, before we introduce the players to you, on behalf of the Army Polo and Riding Center and on behalf of our title sponsors, Jindal Steel, I'd like to wish a very warm welcome to our chief guest, Lieutenant General Upendra Dwivedi, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vice Chief of the Army Staff. We would also like to extend a very great personalities of Mother India, Srimati Savitri Jindal and Dr. Aruna Abhay Oswal. Okay, we have an intruder on the Jaipur Polo Ground. Somebody wants to get too close to the players. I'm sure the Delhi High Court would be taking notice of this. Ladies and gentlemen, let me first introduce you to the players wearing the white shirts. For Sahara Warrior, playing at number 1, we have the youngest player to have ever participated in the finals of the IPA Open. This is Vishwaroop Bajaj, a student of class 11th, all of 16 years old. Not old enough to get a driving license, but he's competing for the National Championship trophy. At number 2 in the light grey helmet, Hoor Ali, one of the most talented players of India. Hard-hitting and such a tough rider. Playing at number 3, we have a very high-quality professional from Argentina, Mr. Daniel Otamendi. He speaks only 10 words per year. We're lucky that this is a leap year. And at number 4, Chris McKenzie, rated at 7-goal handicap, a professional player who's come here all the way from Plettenberg Bay, South Africa. And now let me introduce you to the players of the Jindal Panther team. Ladies and gentlemen, देवियों सज्जनों भाइयों बहनों आपने बॉलीवुड के पिक्चर में 2.5 किलो के हाथ के बारे में सुना है, लेकिन आज आपका परिचय कराएंगे उनसे जिनका एक एक हाथ 5 किलो का है. हैदराबाद के शहंशाह सैयद शमशीर अली, the biggest, strongest, hardest hitting player of India. A key member of the national team, Siddhant Sharma. The man who is going to dazzle you with his stick work and magic, Santiago Marambio. And finally, the captain of the Jindal Panther team, put your hands together for the man of steel, Naveen Jindal. The 2 umpires in the middle of that lineup, Mr. Ben Turner and Mr. Henry Fisher, both very serious-looking professional umpires from the United Kingdom, and the match referee, Commander Akhil Sirohi. May I request the teams to please line up for the throw-in. I now request our chief guest, Lieutenant General Upendra Dwivedi, Vice Chief of the Army Staff. Sir, could you please throw in the ball to commence the 125th final match of the Indian Open National Championship, the Jindal Steel Indian Open Polo Championship 2024. All right, ladies and gentlemen, the ball is in play. This is Hoor Ali for Sahara Warriors, who's picked up the ball. Hoor Ali in attack for Sahara Warriors. First cracking shot. What a perfect strike. The angle is looking perfect. Sahara Warriors have a chance here to open their account here, but it is Shamsheer Ali. Oh, मामला फिल्मी हो गया है दोस्तों. आज एक टीम में पिता खेल रहे हैं, दूसरी टीम में बेटा खेल रहा है. For Jindal Panther playing at number 3, we have the father, Sayyid Shamsheer Ali, and what a dramatic scene. His son, Hoor Ali, is facing him, playing for Sahara Warriors. We're going to get back to this filmy scene in a while from now. This is Jindal Panther trying to script a counter-attack. Players still trying for possession. This is Chris McKenzie now. Chris McKenzie picks up the ball. It bounces. Chris McKenzie steadying it up. Misses out. Shamsheer Ali overriding a bit. And now it's Vishwaroop Bajaj. Vishwaroop, the youngest player on the field, strikes the ball nicely. He set it up for an attack. Sahara Warriors still in possession. This is Daniel Otamendi. Daniel Otamendi right in front of the goal mouth now. It's Daniel Otamendi, and he's taken the ball through to open the account and bring the scoreboard to life.
So ladies and gentlemen, this is the first goal scored in this match. And you can see the scoreboard in front of you. 1 goal in favor of Sahara Warriors. For the benefit of our spectators who are new to the sport of polo, I'd like to inform you this is going to be a 6-chukker match. Each chukker is a playing period of 7.5 minutes. The first hooter will be sounded at the end of 7 minutes and play will continue for another 30 seconds unless there's a goal or some stoppage in play. So 6 chukkers, and we'll have a half-time break after the 3rd chukker. Between chukkers, short breaks of 3 minutes each. This is Hood once again. Lovely pickup by Hood Ali. This is Hood Ali now in attack for Sahara Warriors. A backhander attempted by Santiago. Chris Mackenzie promotes the ball. A chance here. Once again, the ball has gone. Has it gone? Oh my goodness. Look at that strike. Goal number 2 for Sahara Warriors. A strike from 100 yards from a tough angle. And Sahara Warriors beginning this match with 2 quick goals. 4.5 minutes of play left in this first chukker. I'd like to inform our spectators that breaks of 3 minutes each between chukkers and a slightly longer 5-minute break at half time, which is at the end of chukker number 3. Many of our spectators would be new to polo, so I'd like to inform you that after every goal is scored, teams start attacking in the opposite direction. They change ends. This is Chris Mackenzie once again. Chris Mackenzie in attack for Sahara Warriors. Chris Mackenzie being marked there by Siddhant Sharma. Siddhant with a backhander. Turns play, but the umpires have sounded a whistle. We'll have to wait for their decision. A penalty has been awarded to Sahara Warriors. This is a 30-yard penalty, an undefended goal mouth. As you can see, all players of the Jindal Panther team behind the back line, clear of the goal mouth. Oh, that is a straight drive, and that is a quick goal number 3. Sahara Warriors just galloping ahead on the scoreboard. The umpire has signaled a half-chukker break and has asked players to go back to the pony lines to change over to fresh horses. So, ladies and gentlemen, for the last 6 years, the Indian Polo Association has implemented this rule that halfway during each chukker, a short break of 45 seconds is given to players to go and change over to fresh horses. And you can see the players from the Jindal Panther team are towards your extreme left side, Sahara Warriors towards your right side, and they've gone back to their teams and changing over to fresh horses. So a lot of activity happening off the field as well. We have 2 screens on either side of the grandstand towards the extreme left and right. Three goals to nil. Sahara Warriors in the lead. Players lined up for the throw-in. And ball is in play. This is Siddhant Sharma in possession for Jindal Panther. Siddhant taking the ball towards the sideboard. That is trying to shake the opponents off, and he's now being followed by Shamshir. Oh! Player down. But we don't think anything serious has happened because you can see that the player has got back onto his feet. That was Santiago Marambio, the horse just skidding a bit. When this happens, the player always checks the horse for any sign of discomfort. The play will restart with the throw-in. The ball is now in play. And this is Daniel Otamendi who's picked up the ball for Sahara Warriors. This time Sahara Warriors get ahead once again. This is Shamshir Ali. Shamshir Ali approaching the ball and decides to back it
Intercepted by Siddhant Sharma, who decides to change direction. He's coming closer to the grandstand. Watchful, ladies and gentlemen. This is Siddhant Sharma being marked by Siddhant. Siddhant Sharma with the ball. They're right in front of you. Let's have some cheering. This is Siddhant with the backhand of the ball going right next to the boards. It's Chris Mackenzie now. Chris Mackenzie approaching. Santiago Marambio playing at number 3. Santiago Marambio in possession, ready for a hit. He is forced to hit the ball slightly to the left side. He's looking for his players to straighten it out. And Siddhant is there, but once again a clearance coming from Chris. That was in fact, now we have Shamsher Ali. Shamsher in possession. Marambio right in front of the goal mouth. Mallets being raised. A whistle from the umpire. The question is, did I hear the whistle? No way. I have good hearing, but not that good hearing. All you need to do is just look at the horses. If you see the horses completely settled in just a flash of a second, you know that the horses have heard the whistle. And these are polo horses of the highest level in our country. They know exactly what's going on. Every time the umpire sounds a whistle, you'll see the demeanor of the horses changing instantly. So ladies and gentlemen, we now have a penalty in favor of the defending team. Sahara Warriors with the penalty. This is Otamendi with the ball. Otamendi strikes towards his right side. Shamsher checking his horse. Shamsher Ali. Shamsher. It is still Shamsher Ali. He's being marked by Chris Mackenzie. Under pressure. Daniel Otamendi with the ball now. Marambio. There's a big tussle going on between the players. They're trying really hard to get possession. This is Santiago Marambio with the ball now. Santiago comes up with a lofted shot. It's looking good for Jindal Panther. And yet again, Chris Mackenzie takes the ball away, zooms past the center line. It's Chris Mackenzie. Look at what is happening on a galloping horse. Chris Mackenzie strikes. It's Vishwaroop Bajaj with a chance. And what a lovely pickup by Vishwaroop Bajaj. Vishwaroop Bajaj zipping past, misses out on that bouncing ball. Mackenzie keeping a bouncing ball in control. The ball slows down. It's right behind him. Shamsher Ali approaches. Shamsher Ali leaves the ball for Santiago. Santiago with a little flick gives it to Siddhant Sharma. Siddhant Sharma and Shamsher both playing for the present national team. Siddhant strikes a lovely long shot. Shamsher pursuing his horse for speed. And look at that. Shamsher being chased by his son Hoor Ali. This is a tussle going on between father and son. What a sight, ladies and gentlemen. The highest level of excellence. A sportsperson's skills and his integrity both are being questioned, tested and observed. A backhander struck and the ball passes the goal mouth once again. Another backhander, this time by Siddhant Sharma, and the ball goes wide and out of play. Ten seconds of play left in this first chakra. We're heading towards our first break for this match. Once again, that is the first hooter. Another 30 seconds left before we hear the umpire's signal to conclude the first chakra. It is Santiago Marambio. Santiago picks it up on the near side. Santiago Marambio in attack. The ball takes a big bounce. It's still going in the right direction. We'll take a short break of 3 minutes and get back to you for chakra number 2. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo, favorito, comprendo mi cerebro, escribe, será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, ¿qué nos importa? Será porque te amo, que no es difícil.
आपके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, तो इसलिए थोड़ा मैच को ध्यान से देख लें। अगर सवाल का जवाब आपने सही दिया तो पुरस्कार भी मिलेगा। दिस इज Daniel Otamendi and Santiago Marambio now approaching to back the ball in defense for Jindal Panther. He turns the direction towards the far side, but Daniel Otamendi anticipating that. Lovely pickup by Vishwaroop. Vishwaroop Bajaj. Oh, he's got a chance, the youngster there. The ball bouncing towards the goal mouth. Marambio, the ball gets left behind and penalty 5B for Jindal Panther being taken by Siddhant Sharma. Siddhant Sharma strikes. What a shot that is! More than 120 yards on that strike. And the ball taken away by Chris McKenzie. Chris McKenzie in the deep left corner of the field. This time Chris McKenzie strike. Do we have a counter attack? It is Siddhant Sharma and Hurali riding together. Look at Chris McKenzie and his horse is accelerating. Even when the horse is at a flat out gallop, that horse is accelerating. What horsepower in action here, ladies and gentlemen. You must be wondering what is the speed at which these horses are galloping. Well, I tell you what, a flat out gallop begins at 40 feet per second. The ball left behind Siddhant Sharma. Siddhant leaves it for Shamsheer Ali. Shamsheer picks it up. Shamsheer still in possession. It is Shamsheer. Shamsheer strikes. It's a booming strike. The ball crosses the center line. Siddhant Sharma charging towards the ball. Being challenged by Daniel Otamendi. Siddhant backs it. And this is who picks up the ball. Hoor Ali now. Hoor Ali moving up. Leaves it for Chris McKenzie. Chris McKenzie with a booming strike. And here comes a pass. Let's have some cheering. We have two horses at a flat out gallop. Look at the way Otamendi in the white shirt and Siddhant Sharma with a backhander. Just does enough. But it's been intercepted by Hoor. Hoor picks up the ball. It is Hoor Ali now in attack for Sahara Warriors. Hoor Ali. Lovely centered shot. A chance here for Sahara Warriors to increase their tally. The ball racing towards the back line and finally goes out of play. So with 3 minutes and 35 seconds of play left, the umpires again asking the players to take a half chuck break of 45 seconds, and the players are heading back towards the pony lines to change over to fresh horses. Tanto canto, será porque te amo, que siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando no me comprendo, será porque te amo, será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, y nos importa.
estoy pensando, tan solo canto. So folks, action about to start. Yes, you want to say something on the mic? Whatever you're saying is going to be censored. Ladies and gentlemen, play is about to start after that half chakra break. 3-0, Sahara Warriors in the lead. Jindal Panther trying really hard to get that scoreboard to life for them. This is Santiago Marambio. Santiago Marambio waiting to see which way he wants to hit the ball hard. And there comes a whistle from the umpire. Santiago had Daniel Otamendi right in front of him, and Santiago claiming an obstruction because Santiago gave enough time to the player to move out of the danger zone. A polo ball is made out of hard plastic, and a player who is about to strike the ball always gives a few seconds for anybody else who's in front of him so that no man or horse, no player or horse gets injured by a strike. But the Sahara Warriors player taking a couple of extra seconds to move out of the way, and the umpire seeing that obstruction and giving a foul, a penalty from the center of the field. This is a penalty 5B. Penalty 5B from the center of the field. It's going to be Siddhant Sharma. We saw that booming strike from Siddhant Sharma. Siddhant is a member of the present national team, which in fact is leaving for an international tour of Australia in 2 days from now. Siddhant is playing at the number 2 position for Jindal Panther, and wearing number 4 for Jindal Panther is Shamsher Ali, who is the captain of the national team. This is Siddhant Sharma on the ball now. Siddhant Sharma leaves it for Marambio. Marambio strikes, passes the ball up to Siddhant. Shamsher is there, trying for a pickup. A bunch of players over the ball, and it gets left behind. Marambio back in possession. Marambio strikes, it's looking good. Marambio has scored 1 goal and 1 motorcycle. ये ग्राउंड स्टाफ में जो मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे ना बिना हेलमेट के, इनको 1-1 लाख रुपए का चालान लगाओ. ये सब ठीक है, लेकिन हेलमेट मैंडेटरी है. पोलो फील्ड पे चाहे आप प्लेयर हो या कोई भी हो, हेलमेट मैंडेटरी है. तो दोस्तों, इसी के साथ अब देखिए दोनों टीम्स एक बार फिर मैदान के बीचों बीच आ गई, और एक बार फिर जिंदल पैंथर की टीम ने आक्रमण शुरू किया. शमशीर अली बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बॉल को नियंत्रण में करके अपने आक्रमण को आगे बढ़ाया. शमशीर अली के पास मौका है जिंदल पैंथर के लिए, एक और गोल. दोस्तों, इसीलिए भारतीय पोलो की दुनिया में शमशीर को हैदराबाद का शहंशाह बोला जाता है. शमशीर जो शब्द है उसका मतलब है तलवार, और शमशीर अली एक भारतीय पोलो की चमकती हुई तलवार है. कभी आपको मौका मिले तो जाके इनको प्रैक्टिस करते हुए देखिएगा. ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो बॉल को हवा में रख के 300 गज की दूरी पूरी कर सकते हैं. Is it me you're signaling towards, lady? I'm getting some signals from the spectators, but I'm very good at, letting all this pass by. और अब सहारा वॉरियर्स के पास मौका है अपना खाता बढ़ाने के लिए. करारा बैकहैंडर लगाया सांतियागो मराम्बियो ने. नवीन जिंदल के पास बॉल है, नवीन जिंदल ने उसको बाएं तरफ से उठाया. नवीन जिंदल के बगल में है डैनियल ऑटोमेंडी. डैनियल ऑटोमेंडी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साल में 10 शब्द बोलते हैं. पोलो की दुनिया में हम इनको सबमरीन का नाम दिया हुआ है हमने इनको. डैनियल ऑटोमेंडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, I've coined a nickname for him. He's like the nuclear submarine, silent and deadly, just does his work. ये दर्शकों की जानकारी के लिए डैनियल ऑटोमेंडी अर्जेंटीना से है, प्रोफेशनल प्लेयर है, शादीशुदा है और साल में केवल 10 शब्द बोलते हैं. तो मेरे ख्याल हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके घर में बहुत शांति होती होगी.
बहुत ही नेक इंसान है और आप सबको मैं बता दूं जितने भी यहाँ पे यंग प्लेयर्स हैं और राइडर्स हैं वो सब डैनियल ओटोमेंडी को देखते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये शमशीर अली के पास बॉल है, शमशीर के ठीक पीछे सिद्धांत शर्मा, बॉल वहां पीछे छूट गई, बैकहैंडर लगाया विश्वरूप बजाज ने और बॉल को उठा लिया है क्रिस मैकेंजी को चैलेंज कर रहे हैं सांतियागो मराम्बियो। क्रिस मैकेंजी ने लटक के नेक शॉट के सहारे बॉल को आगे बढ़ा दिया सिद्धांत शर्मा बॉल की तरफ और रक्षात्मक बैकहैंडर के साथ दिशा पलट दी। देखिए किस तरीके से डैनियल ओटोमेंडी और शमशीर अली बॉल की तरफ दोनों प्लेयर इतनी तेजी से आए। डैनियल ओटोमेंडी के पास मौका है, डैनियल ने फिर बॉल को आगे बढ़ा दिया, बाईं तरफ से पिकअप कर लिया डैनियल ओटोमेंडी को मार्क कर रहे हैं शमशीर अली। दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली प्लेयर्स हैं। डैनियल के पास बॉल है, उन्होंने बॉल को छोड़ दिया क्रिस मैकेंजी के लिए। क्रिस के पास मौका है और क्रिस के पास ताकत है, अगर चाहे तो इतनी ही दूरी से वो गोल स्कोर कर सकते थे। बॉल को पकड़ लिया है सांतियागो मराम्बियो के पास बॉल है और बॉल को एक बार फिर मैकेंजी ने उठाया, बैकहैंडर के साथ दिशा बदली। ये हूर ने बैकहैंडर लगाया था और मैकेंजी ने मिस कर दी। 15 सेकंड का समय बाकी है और शमशीर अली ने बॉल को उठा लिया है। शमशीर अली, ये शमशीर अली के साथ पंगा टेकर कौन है यार? दिस लिटिल डॉगी वांट्स टू प्ले पोलो, ही विल हैव टू टेक अनदर बर्थ। और इसी सीटी के साथ दूसरे चक्कर की समाप्ति हुई। यहीं पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक बार फिर 3 मिनट का छोटा सा ब्रेक और आपके पास फिर आएंगे तीसरे चक्कर के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीम्स के लिए। तो दोस्तों तीसरे चक्कर का खेल शुरू होने वाला है। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए तीसरे चक्कर के बाद हाफ टाइम का ब्रेक होगा, 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक, जब हम सभी दर्शकों को ग्राउंड पे आमंत्रित करेंगे
threading के लिए. Ladies and gentlemen, all spectators will be invited onto the field after the third chakra finishes during the halftime break. I hope your cell phones are charged so that you can take some selfies and send 500 good morning messages tomorrow. Players getting ready to restart play. The umpire is asking the players to line up for the throw in. You can see a close-up view of the play on these giant screens on both sides of the stands. So you've got an option. But it's really nice to see so many spectators actually looking at the field. It's a new record for polo here at the Jaipur Polo Ground. Ladies and gentlemen, today is such a historic day for Indian polo. We are celebrating 125 years of the IPA National Championship. It is Daniel Otamendi. Daniel being marked there by Santiago Marambio. Daniel is on the ball. That's lovely coverage on the giant screen also. It's Siddhant Sharma. A couple of pickups on the near side. A lovely shot on the near side. Sets it up. It is Siddhant Sharma. Oh, look at that. What control there. Siddhant Sharma still in attack for Jindal Panther team. Naveen Jindal taking his place ahead. Players playing at number 1 and number 2 position. They have the primary responsibility of attacks. Number 3 is a playmaker and number 4 plays deep in defense. Mind you, in the sport of polo, there are no defensive tactics. Even when you're defending, you're galloping at full pace. So the ball has gone out of play and we'll just wait for the umpires to restart play now. A spot hit taken by Chris McKenzie. Chris McKenzie की लंबी स्ट्राइक और इसी के साथ सहारा वॉरियर्स के पास एक बार फिर मौका है. हूर अली ने बॉल को उठाया लेकिन बॉल पीछे छूट गई है. वहां पे सिद्धांत शर्मा ने बहुत ही लंबे बैकहैंडर के साथ दिशा बदलने की कोशिश की. क्रिस मैकेंजी और अब सिद्धांत के पास एक बार फिर बॉल है और बैकहैंडर के साथ हूर ने ये बॉल आगे पीछे टेनिस बॉल की तरह जा रही है लेकिन प्लेयर्स को जैसे ही मौका मिलेगा. ये देखिए किस तरीके से मैकेंजी ने बॉल को उठा लिया. उनको चैलेंज कर रहे हैं माराम्बियो. मैकेंजी ने बॉल को मारा लेकिन बॉल वाइड जा रही है दाहिनी तरफ और बॉल इसी के साथ बैकलाइन को पार कर चली और मैदान के बाहर हो गई है. अब हिट इन के साथ प्ले शुरू होगा. सांतियागो मराम्बियो हिट इन लेने के तैयार. टैपिंग कर रहे हैं. टैप करके इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथी खिलाड़ी सही स्थान पर पहुंचेंगे तो एक लंबे पास के साथ बॉल को उन तक पहुंचाया जाए. सिद्धांत शर्मा ने सीधी स्ट्राइक के साथ सेंटर लाइन के साथ ही बॉल को आगे बढ़ा दिया. वहां पे क्रिस मैकेंजी है. क्रिस मैकेंजी के ठीक साथ लगे हुए शमशीर अली. क्रिस मैकेंजी ने एक बार फिर बॉल को पकड़ा और दिशा घुमा ली है लेकिन ठीक तरीके से करेक्ट नहीं कर पाया. और सिद्धांत शर्मा के बैकहैंडर के साथ मौका यहां जिंदल पैंथर के लिए. नवीन जिंदल ने बॉल को मारा. देखिए किस तरीके से नवीन जिंदल हवा से बातें कर रहे हैं. बहुत ही शानदार स्ट्रोक जिंदल पैंथर का. यहां पे गोल होने के लिए उनके पास एक मौका है. सिद्धांत शर्मा के पास बॉल है लेकिन सिद्धांत को चैलेंज कर रहे हैं. हूर अली सिद्धांत के ठीक आगे. क्रिस मैकेंजी बॉल को स्ट्राइक जरूर किया. बैकहैंडर के साथ एक बार फिर दिशा पलटने की कोशिश लेकिन अंपायर का संकेत. अब देखते हैं यहां पे अंपायर का निर्णय क्या होगा. दोस्तों इस मैच के दो अंपायर हैं बेन टर्नर और हेनरी फिशर. दोनों ही प्रोफेशनल अंपायर जो इंग्लैंड से यहां आए हैं और मैच के रेफरी हैं कमांडर अखिल सिरोही. कभी कभी ऐसा होता है कि अंपायर्स के बीच में सहमति नहीं होती है और उनके बीच में the ambulance is on the field.
Looks like Chris Mackenzie is on the ground and he looks in some discomfort. Chris Mackenzie is one of the fittest and toughest players on the Indian circuit. He's a professional player from South Africa. Ladies and gentlemen, if you look on the giant screens, you can see Chris Mackenzie on the ground receiving medical aid, and this is the reason why no polo match can take place without the presence of an ambulance. In fact, the rule is that anywhere in our country, if a polo match has to take place, the presence of an ambulance is mandatory. Polo is one of the riskiest sports in the world, and polo is played in 76 countries across the world. Members of the Sahara Warriors team heading towards Chris Mackenzie to see what has happened to their star player. Ladies and gentlemen, we'll take a short break before we see start of play. We wish all the very best to Chris Mackenzie for a speedy recovery. All right, ladies and gentlemen, time to put your hands together for Chris Mackenzie, who's back on his horse after receiving tender loving care from our medical team, and play is about to resume for the remaining 4 minutes and 27 seconds of this third chakra. 3-2. Sahara Warriors had taken an early lead by scoring the first 3 goals of this match. This is Siddhant Sharma. Siddhant Sharma strikes. It's looking good, but the ball has just missed the mark by a few inches. Play will restart with a hit in from the back line.
A chance here. Both the sides working hard to take possession. It's Daniel Otamendi who picks up the ball flying across the scoreboard. It's Daniel Otamendi now being challenged by Shamsheer. Shamsheer riding that grey horse. Daniel Otamendi with his head down, close to the ball. Santiago Marambio pinches the ball away. It's Santiago for Jindal Panther. We have a counter attack. Santiago straightens the ball out, but we have Chris McKenzie who is approached. Chris McKenzie with a backhander. The ball takes a deflection from Shamsheer's horse. And it is Siddhant Sharma who picks it up now. Siddhant Sharma, still Siddhant. Siddhant being followed by Shamsheer, and the ball gets left behind. Oh, look at that strike from Chris McKenzie. It's a horse race now. Chris McKenzie heading straight, strikes, the ball takes a deflection to the left. Vishwaroop Bajaj trying to cut, and he gets a cut shot. He'll have to get one more strike. The ball is going wide to the left side, towards the back line. Stationary on the field. A pickup by Shamsheer. Shamsheer Ali strikes. It's a huge strike by Shamsheer Ali. He passes the ball up to Naveen Jindal. Chance here for Naveen Jindal, but the ball backed by Vishwaroop Bajaj. Look at the talented young player, Vishwaroop Bajaj. And now we have Daniel Otamendi who strikes. Daniel Otamendi still in possession. Hoor Ali keeping the ball in control. It is Hoor Ali, but the ball has gone short of the goal mouth and over the back line. 2 minutes and 14 seconds of play left. The umpire has given the signal to both the sides to go and change over to fresh horses. Now, though this is a half chukka break, but the umpires wait for a neutral position in the play to give the players 45 seconds to go and change over to fresh horses. This is a team, Jindal Panther team, riding past the grandstand. Come on, fans, let's have some cheering for your team. It's been more than 10,950 days. All these days account to nothing less than 3 whole decades, during which not only trophies were lifted, not only records were broken, not only history was created, but everyday passion won. Passion of horsemanship, the celebration of legacy, of building a path to walk on. It defines dreams, hard work, and unending determination of the panther inside you. Jindal Panther Polo, celebrating polo for over 3 decades. Players are about to start for the remaining 2 minutes of chakra number 3. कृपया ध्यान दें, ये कैमरामैन जिन्होंने अपने ट्राइपॉड यहां लगाए हुए सामने, अपने ट्राइपॉड को पीछे करिए, सेफ्टी जोन है ये. घोड़ों के पास स्पीड होती है, ब्रेक्स नहीं होती. Three goals to 2. 2 minutes of play left in this third chakra. We are heading towards the half-time of this match. The ball lying right next to the sideboard. A backhander by Santiago passes the ball to Siddhant Sharma. Hoor with the ball. Hoor leaves it for Chris McKenzie. Chris picks up the ball and starts his run. Chris McKenzie strikes, doesn't get a clean strike, and we have a whistle as Shamsheer Ali was approaching the ball, obstructed by Daniel Otamendi. And that is a foul now in favor of the Jindal Panther team.
Santiago Marambio from the spot. Santiago with a lofted shot passes the ball up. Shamsheer Ali is there, the ball stopping on the turf. Shamsheer being marked by Daniel Otamendi. Shamsheer not getting space to make a run. Shamsheer strikes, he puts the ball forward ahead for Santiago, but it's been intercepted by Chris McKenzie. He's coming towards the grandstand. Watchful, ladies and gentlemen. It's Chris McKenzie approaching the grandstand. He's looking for some space. He strikes, he's coming right. कैमरा वाले भाइयों, कभी कभी तो कमेंट्री सुन लो. आपको कितनी बार रिक्वेस्ट किया पीछे हो जाइए. ये मीडिया वाले वैसे तो किसी की सुनते नहीं है भाई. ये अनाउंसमेंट हम आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं. आप सेफ्टी जोन में खड़े हैं, पीछे हो जाइए. शमशीर अली, शमशीर with a chance. Shamsheer leaves it for Siddhant. Siddhant strikes, but the ball takes a big deflection. It is Siddhant and another strike, but the ball is going wide to the right side. And there's a big dent on that white car. "36 seconds play left. The umpire has signaled a foul. We just have to wait to get the decision from the umpire. We now have a last blazing move for Sahara Warriors, but Santiago Marambio comes from behind, turns the ball around. Santiago in possession. Time ticking by. Santiago strikes. It's a lovely pass to Shamsheer Ali, but Chris McKenzie in a flash, he backs it and turns play for Sahara Warriors. Santiago back in possession. The ball going back and forth between these two professional players. Santiago this time. Siddhant with the lofted shot. The first hooter has been sounded. Play will continue for another 30 seconds. None of the teams able to get the ball close enough for a strike into the goal mouth. And this time it's Vishwaroop Bajaj who's pinched the ball clear. A backhander from Shamsheer Ali. Daniel Otamendi also back. So many backhanders, one after the other. It is Chris McKenzie under pressure from Siddhant Sharma. A big swing from Vishwaroop and a backhander from Santiago. A whistle almost simultaneously as the hooter marking the end of chakra number 3. Ladies and gentlemen, I think one of the players has also suffered an injury. That is Hoor Ali, who's shaking his hand. So ladies and gentlemen, with that signal from the umpires, we are now into half-time for this match. Let's take a 5-minute break, and we'd like to invite all our spectators to please join us on the Jaipur Polo ground to enjoy a tread-in of the field. Okay, dear spectators, I'm very happy to tell you that we're going to have 3 special prizes. One for the best dressed male, one for the best dressed lady, and one for the most enthusiastic spectator. So we are watching you carefully. We're using natural intelligence, not artificial intelligence. Everything is natural here on the polo field. Commander R.S. Yadav giving me a stern look, figuring things out. Sir, will not let you down. देखो प्यारे दोस्तों, मैं 2 बार आपको इनवाइट कर चुका हूं. अब हिंदी में समझा रहा हूं. ग्राउंड पे आ जाओ. 5 मिनट की हाफ टाइम ब्रेक है. जब तक आप ग्राउंड पे पहुंचोगे ब्रेक खत्म होने का टाइम हो जाएगा. यही प्रॉब्लम होती है, कोई कमेंट्री सुनता नहीं है.
than 10,950 days. All these days account to nothing less than 3 whole decades, during which not only trophies were lifted, not only records were broken, not only history was created, but everyday passion won. Passion of horsemanship, the celebration of legacy, the building a path to walk on. It defines dreams, hard work, and unending determination of the Panther inside you. Jindal Panther Polo, celebrating polo for over 3 decades. It's been more than 10,950 days. All these days account to nothing less than 3 whole decades, during which not only trophies were lifted, not only records were broken, not only history was created, but everyday passion won. Passion of horsemanship, the celebration of legacy, of building a path to walk on. It defines dreams, hard work, and unending determination of the Panther inside you. Jindal Panther Polo, celebrating polo for over 3 decades. It's been more than 10,950 days. All these days account to nothing less than 3 whole decades, during which not only trophies were lifted, not only records were broken, not only history was created, but everyday passion won. It's been more than 10,950 days. All these days account to nothing less than 3 whole decades.
Ladies and gentlemen, check. Ladies and gentlemen, play begins for Chaka number 4. This is a penalty for Jindal Panther. Santiago Marambio strikes. It's a massive strike, but the ball has spun a little to the right, but he's made it, has he? Yes, the umpire has confirmed the goal, even though the ball looked like it was spinning to the right. Players coming back to the center line. Players back on the center line.
Play begins. A backhander from Shamsher picked up by Siddhant Sharma. What a strike by Siddhant Sharma. Chris McKenzie approaching the ball. He's looking behind. Oh, look at that. He was looking behind on the right side and takes a backhander from the left side. And it's Siddhant Sharma. What a lovely strike. Has he scored the goal with that strike? The ball has just reached the doorstep. But Chris McKenzie backs the ball. It's still with Jindal Panther. Santiago Marambio turns around. Chance here for Jindal Panther to equalize. It is still Santiago Marambio in possession. He's being hassled by Otamendi. And Otamendi does enough to back the ball, takes it away from the danger zone. Players working very hard. And we can hear some players becoming vocal. Nothing to worry about, ladies and gentlemen. Players get heated up, warmed up, charged up, and then they start discussing the weather. और दोस्तों इसी के साथ जरा भाषा का चैनल चेंज किया जाए। एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज भारतीय पोलो का ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता, भारतीय पोलो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता पहली बार सन 1900 में खेली गई थी और आज 125वीं सालगिरह है भारतीय पोलो की। ये देखिए किस तरीके से लंबा शॉट लगाया था वहां पे क्रिस मैकेंजी ने, लेकिन अब मराम्बियो के पास बॉल है। सांतियागो मराम्बियो, सांतियागो को मार्क कर रहे हैं हूर अली, और ये देखिए अपना समय लेकर बॉल को दागा। वहां पे सिद्धांत शर्मा ने बॉल को आगे बढ़ा दिया। ये शमशीर अली अब बॉल पर है। शमशीर अली बाउंसिंग बॉल को काबू में रख रहे हैं, शमशीर अली को मार्क कर रहे हैं। क्रिस मैकेंजी बॉल पीछे छूट गई। वहां पे सांतियागो ने एक बार फिर बॉल को पकड़ा। जिंदल पैंथर की टीम आक्रमण पे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई जिंदल पैंथर की टीम, और सिद्धांत शर्मा के पास मौका है। बॉल वहां पे केवल 5 गज दूर अपने लक्ष्य से, लेकिन एक बैकहैंडर के साथ एक बार फिर गोल माउथ से बॉल को दूर कर दिया। शमशीर अली बॉल की तरफ आ रहे हैं और शमशीर अली को मार्क किया विश्वरूप बजाज ने। थोड़ा 10 सेकेंड का ब्रेक लगेगा क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मेरी दूर दृष्टि है लेकिन पार दृष्टि नहीं है। और ये देखिए किस तरीके से ऑटोमेंडी ने अब बॉल को संभाल लिया है। पोजीशन में है डैनियल ऑटोमेंडी। डैनियल ऑटोमेंडी ने पास दिया क्रिस मैकेंजी को। क्रिस मैकेंजी के साथ लगे हुए सिद्धांत शर्मा। क्रिस मैकेंजी ने बात को आगे बढ़ाई। क्रिस मैकेंजी बहुत ही फिट प्लेयर है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्रिस मैकेंजी साउथ अफ्रीका के प्रोफेशनल प्लेयर है। उम्र 32, कमर 30, इतने फिट है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 minutes of play left in this fourth chapter. The team's trying really hard to put together an attacking move. This is Daniel Otamendi once again getting ready for a backhander. Jindal trying really hard. Siddhant Sharma with the ball. Will he get the space? And oh, we have a backhander by Vishwaroop Bajaj. And Vishwaroop probably swerving to the left while taking that backhander. The umpires are asking the players to go and... Is this a half chapter break? Yes. He's asking the players to go and change horses. All the spectators are looking very serious, as if you're preparing for an exam. So here's a question, a quick question. Don't even bother to look into your smartphones because even Mr. Google doesn't know the answer to this question. Who was the first winner of the Indian Open Championship? Name of the team that won the Indian Open Polo Championship in the year 1900. You have 5 seconds to answer. 5, 4, 2, 1.5, 0. Okay, we'll not let you know the answer. Let it be hanging. Yeah, we want that suspense to move around in your head so that you'll have dreams at night. You'll dream about 1900. But we have an easier question coming up for you. You know, the beautiful thing about today's game is that we have a father and son combination on the field. Shamsher Ali is playing at number 4 for the Jindal Panther team, and Hoor Ali is playing at number 2 for Sahara Warriors.
This is a test not only of their skills and competence, but of their character and integrity. दोस्तों, जब बेटे और बाप के बीच में ऐसा खेल के मैदान पर संघर्ष होता है ना, तो दिलों में बहुत सवाल उठते हैं कि जब बेटा बाप की ओर देखता है तो सोचता है इनको हराऊं या हार जाऊं। जब अपने पिता के सामने ये सवाल मन में आता है तो सवाल का जवाब यह है कि अगर आप जीत भी जाओगे तो आप हार जाओगे। What a situation, ladies and gentlemen, and imagine what must be the emotional state of Nazia Ali, wife of Shamsheer, mother of whom her husband is playing for one side, the son is playing for the other side, and the mother must be really wondering, surely hoping that they both come back safe from the polo field, doing their best. And that is something we always expect from Shamsheer Ali and his family, one of the most dedicated polo families of India. जिंदल पैंथर के लिए पेनल्टी 60 गज की पेनल्टी है। दोस्तों ध्यान से देखिए, बॉल को 60 गज की दूरी पे लगा दिया गया है और ये डिफेंडेड पेनल्टी होती है जहां डिफेंडिंग टीम के प्लेयर्स को मौका मिलता है गोल के सामने खड़े होने का। लेकिन जो प्लेयर पेनल्टी स्ट्राइक ले रहा होता है उसकी कोशिश ये होती है कि बॉल को हवा में मारा जाए। और ध्यान से देखिए, पोलो के गोल पोस्ट पे ऊपर कोई बल्ली नहीं होती, देयर इज नो टॉप बार। ये केवल एक ऐसा खेल है पोलो के अलावा रग्बी का खेल जहां पे गोल पोस्ट के ऊपर टॉप बार नहीं होती। इसीलिए कोशिश अब सांतियागो मरांडियो की कोशिश है कि ऊंची शॉट लगाई जाए और ये देखिए बॉल पेड़ के ऊपर से, आवाज सुनाई दी, पेड़ों के ऊपर से निकल के बॉल सफदरजंग एयरपोर्ट में एक प्लेन खड़ा था उसके ऊपर गिरी है, डेंट लग गया बहुत बड़ा, कल पेंट जॉब होगा उस पर। लंबी स्ट्राइक लगाई वहां क्रिस मैकेंजी अपने टीममेट डैनियल ऑटोमेंडी की तरफ बॉल को आगे बढ़ा के और खुद उनके आगे चले गए। लेकिन अब अंपायर की विसल, इस मैच के दो अंपायर हैं, अंतरराष्ट्रीय अंपायर हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, मिस्टर बेन टेलर और मिस्टर हेनरी फिशर। इनको रूल रेगुलेशन पढ़ने में बहुत मजा आता है, इसीलिए प्रोफेशनल अंपायर है, बहुत सीरियस है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, इनकी हियरिंग बहुत स्पेशल होती है क्योंकि कभी कभी ना गेम के दौरान प्लेयर्स थोड़े भावुक हो जाते हैं, इमोशनल से हो जाते हैं, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, उसने किया, इसने किया। तो अंपायर की बड़ी सेलेक्टिव सी हियरिंग होती है, जो भी बोला प्लेयर कुछ भी बोल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, अंपायर वही करेंगे जो उन्होंने करना है और केवल रूल्स के हिसाब से चलते हैं। डैनियल ऑटोमेंडी अब बॉल की तरफ आगे बढ़ गए, डैनियल ऑटोमेंडी ने स्ट्राइक लगाई, ऊंची शॉट, और देखते हैं किसके पास बॉल लैंड करती है। विश्वरूप के बॉल में थी, क्रिस मैकेंजी के उठाने की कोशिश, सिद्धांत शर्मा ने बॉल को पकड़ लिया, सिद्धांत शर्मा बॉल को घुमा के एक आक्रमण के लिए तैयार हो गए, सिद्धांत शर्मा ने बॉल को आगे बढ़ा दिया, डैनियल ऑटोमेंडी तैयार है वहां रक्षात्मक रूप से बॉल को बैकहैंडर लगाने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं, उनके साथ साथ है शमशीर अली। डैनियल ऑटोमेंडी ने बाईं तरफ से बॉल को घुमाया लेकिन बॉल पीछे छूट गई, छूट नहीं गई, छोड़ दिया उन्होंने बॉल को, क्रिस मैकेंजी ने बॉल को पकड़ा है, क्रिस मैकेंजी सहारा वॉरियर्स के लिए एक बार फिर फुल स्पीड से अटैक कर रहे हैं, उनके पास एक मौका है, कट शॉट लगाई लेकिन बॉल थोड़ा सा चूक गई। 1 मिनट 35 सेकंड का टाइम बाकी। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, जब भी आपको स्कोर के बारे में पता करना है तो आंख उठा के देखिए, सामने स्कोर बोर्ड है। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, मैं अपने दोस्तों का नाम अलग से लेता हूं कि वो कोशिश कर रहे हैं सज्जन बनने की, उसी दिशा में चल रहे हैं। और ये देखिए एक बार फिर मौका है, जिंदल पैंथर के पास मौका है लेकिन बैकहैंडर लगा दिया विश्वरूप बजाज, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी हैं आज इस मैदान में। और पहली बार देखिए किस तरीके से सांतियागो मरांडियो ने बॉल को आगे बढ़ाया। डैनियल ऑटोमेंडी,
What a strike there. क्रिस मैकेंजी ने बॉल को इतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ा दिया और डैनियल ओटोमेंडी आगे ले जा रहे थे, लेकिन बैकहैंडर के साथ शमशीर ने बॉल को पलटा है और क्रिस मैकेंजी ने बॉल को उठाने की फिर से कोशिश की, लेकिन वहां फाउल करार दिया अंपायर्स ने। तो दोस्तों, इतनी दूरी से स्पेक्टेटर्स के लिए मुश्किल होता है ये देखना कि कभी कभी जब प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैदान पे क्या हो रहा है। लेकिन सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि पोलो में जब भी आप दो या दो से ज्यादा प्लेयर्स को बॉल की तरफ अलग अलग दिशाओं से आते हुए देखेंगे, मतलब दो या दो से ज्यादा प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ अगर आ रहे होंगे तो वो जरूरी फाउल करार दिया जाएगा। आप खुद सोचिए, वैसे दिल्ली की सड़कों का उदाहरण देना तो गलत ही है क्योंकि वहां तो सब लोग एक दूसरे की तरफ ही गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर मैदान पर लोग एक दूसरे की तरफ गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? टक्कर। टक्कर माने दर्द। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन में अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है तो उस सिचुएशन में अंपायर उसे फाउल दे देते हैं। स्पॉट हिट की पेनल्टी दी गई है सहारा वॉरियर्स को। सहारा वॉरियर्स ने पहले चक्कर में ही 3 गोल दाग दिए थे और उसके बाद से अभी तक एक भी गोल नहीं कर पाए हैं। 14 सेकंड का प्ले बाकी है, 14 सेकंड का प्ले बाकी है। और क्रिस मैकेंजी ने शॉट लगाई है। व्हाट अ स्ट्राइक फ्रॉम क्रिस मैकेंजी। Put your hands together, ladies and gentlemen. What a celebration of 125 years of the Indian Open National Polo Championship. Chris Mackenzie scoring from more than 100 yards. And with that, we come to the end of Chakra number 4 as the umpire has signaled the end of play for Chakra number 4. The scoreboard now reads 4 goals to 3 in favor of Sahara Warriors. We'll take a short break of 3 minutes and be back with you for the next part of the action, Chakra number 5. Oh, we've got some nice goodies coming from the goody spectators, right? So we'll give away those awards. Ladies and gentlemen, we've got some really nice prizes coming for the spectators. And the good news is there'll be no tax deduction at source. You'll get the entire prize. Okay, I've just been asked how old is the youngest player. That's a nice play of words. Or should we say how young is the youngest player? Yeah. Yep. You're raising your hand to answer the question or question me? Huh? Answer. Yes. भाई तू तो बॉन्ड है यार। आपका नाम? धर्व। पूरा नाम? धर्व खन्ना। धर्व खन्ना, congratulations. You have just won a prize for the most enthusiastic spectator. धर्व खन्ना। अब कहीं मत जाना, आपके लिए प्राइज तैयार कर रहे हैं। अभी सेक रहे हैं उसको, गर्मा गर्म करारा करके लेके आते हैं। Ladies and gentlemen, on behalf of the polo community, I'd like to inform all our guests and spectators that polo is a very welcoming sport. We always welcome all families and children. Even young toddlers and babies are always welcome. Whenever you come to watch a polo match, you're most welcome to bring your families together. And for this, I'd like to express gratitude
to our senior players who have set up this tradition and made polo a very welcoming place for one and all. Players coming back to the center line. Ladies and gentlemen, we have a substitution for the Jindal Panther team. For Shamsher Ali, we now have Simran Shergill on the field. This is Siddhant Sharma trying really hard. Chris McKenzie picking up the ball for Sahara Warriors. Chris McKenzie and Marambio with the backhander doesn't make contact. Hood Ali picks up the ball. It is Hood now attacking for Sahara Warriors. Hood challenge there. This is Daniel Otamendi. Daniel gets a big bump from Siddhant Sharma. Players now very close to the sideboards. It's still Daniel Otamendi. Marambio strikes. And the ball is coming towards the grandstand. It is Chris McKenzie. Come on, let's have some cheering. This is Chris McKenzie right in front of you. It is Chris McKenzie for Sahara Warriors. Getting ready. He's being marked by Siddhant Sharma. Leaves the ball for Otamendi. Otamendi strikes, but the ball gets left behind. It is Simran Shergill. Simran Singh Shergill getting ready. And there comes a strike from Simran. And look at the pace at which Marambio attacked. And there comes a whistle. Chris McKenzie trying to pick up the ball ends up crossing Simran Shergill, who is following the line of the ball. Okay, let's have a quick question for our non-polo players. What is the line of the ball? Anybody? You'd like to try? The line of the ball, ladies and gentlemen, is the line in which, it's the direction in which the ball is traveling and will continue to travel. Now the problem is that it is an imaginary line. And as you can understand, polo players have a very overactive imagination. So when they strike the ball, each polo player is imagining what the line of the ball would be. We'll get back to that. This is Siddhant Sharma, ready to strike from the 40-yard mark for Jindal Panther. He strikes and the ball goes right through for the equalizer. Players coming back at a slow canter. Now this is also something which is defined by the rules of polo, that after a goal is scored, players have to return to the center line at a slow canter. This allows for horses to catch their breath after an attacking move. Ball in play. Ball in play. And Chris McKenzie ने ball को पकड़ा की बार. Oh! क्रिस मैकेंजी घूम रहे थे अपने बाईं तरफ. सिमरन शेरगिल उनके बहुत करीब थे. ऐसा लग रहा है उनको थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन क्रिस मैकेंजी ने तुरंत आके सिमरन को बोला, भाई सब ठीक है कि नहीं. Ladies and gentlemen, polo looks like a battle on the polo field, but at the end of the day, it's just a game, it's a sport, and we players, we don't see our opponents as enemies. The opposing team is just opponents, only for the duration while the match is on. And you will see when the match concludes, the players will be shaking hands and congratulating each other for a good fight. Chris McKenzie places the ball at the 60-yard mark and is getting ready to strike. The scoreboard right now is 4 goals each. Chris McKenzie approaching the penalty spot. It's a 60-yard penalty
for Sahara Warriors. Chris McKenzie strikes, and look at the ball flying to the Air Force Golf Club through the post for goal number 5. एक बार फिर सभी फोटोग्राफर भाइयों से निवेदन है, आप लोग सेफ्टी जोन से पीछे आ जाइए, और भाई साहब जो गुलाबी शर्ट में डोले वाले भाई साहब हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाइए प्लीज। बॉल इन प्ले, और इस बार हूर ने बॉल को उठाने की कोशिश की, बैकहैंडर लगाया सिमरन शेरगिल ने। डैनियल ऑटोमेंडी के पास बॉल है, डैनियल ऑटोमेंडी के साथ साथ उनको चुनौती दे रहे हैं सिद्धांत शर्मा। डैनियल ऑटोमेंडी ने बॉल को एक करारी स्ट्राइक के साथ दाहिनी तरफ पहुंचा दिया, लेकिन बॉल बैक लाइन के बहुत पास, और देखना होगा कि बैक लाइन को पार कर चुकी है। जी हां, इसी के साथ खेल की शुरुआत एक हिट इन से होगी। जिंदल पैंथर की टीम 4 गोल के साथ, और सहारा वॉरियर्स अब 5 गोल पर। 5वां गोल क्रिस मैकेंजी ने एक शानदार स्ट्राइक के साथ स्कोर किया था कुछ ही पलों पहले, और देखिए किस तरीके से बॉल को आगे बढ़ाया। वो सांतियागो मराम्बियो के सामने थे क्रिस मैकेंजी। डैनियल ऑटोमेंडी के ठीक पीछे चल रहे हैं सिमरन शेरगिल। डैनियल ने कट शॉट लगाया, कट शॉट, लेकिन बॉल थोड़ा सा चूक गई, और 3 मिनट 22 सेकंड का समय बाकी है इस 5वें चक्कर में। अंपायर्स की तरफ से संकेत आ गया हाफ चक्कर ब्रेक का। ये मैच का एक बहुत ही क्रूशियल भाग है, जहां पे सारे प्लेयर्स वापस जा रहे हैं, नए नए घोड़ों पे सवार होकर आएंगे। और दोस्तों, ज्यादातर प्लेयर्स जो है अपने सबसे बेहतरीन घोड़े इस समय के लिए रखते हैं। सहारा वॉरियर्स की पूरी कोशिश होगी कि जल्द ही 2-3 गोल दाग दिए जाएं। वहां जिंदल पैंथर चाहेंगे कि इक्वलाइज करके वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कितना बढ़िया मौसम है यहां पे। आज तो दिल्ली की हवा इतनी साफ है कि दिमाग में दर्द हो रहा है कि करें क्या इतनी साफ हवा का। और दोस्तों, आसमान की तरफ नजर उठा के देखिए तो बहुत कंफ्यूजन मची हुई है। कहीं बादल सफेद हैं, कहीं बादल काले हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन मैदान में आज क्या गेम चल रहा है। 5वां चक्कर चालू है। जिंदल स्टील इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप 2024 का ये फाइनल मैच। और एक बार फिर सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश के इतिहास में, भारतीय पोलो के इतिहास में आज का दिन कितना विशेष है कि 125वीं सालगिरह भारतीय पोलो की। प्लेयर्स नए फ्रेश घोड़ों के साथ वापस आ रहे हैं। 3 मिनट 22 सेकंड का खेल बाकी है। दोस्तों, पोलो का खेल तो दाहिनी तरफ शुरू होने वाला है, लेकिन बाईं तरफ अगर नजर घुमा के जल्दी से देखेंगे तो वहां पे आपको रिसाला के घुड़सवार दिखेंगे अपनी लाल पगड़ियों में। विश्व की एकमात्र एक्टिव कैवलरी रेजिमेंट 61st कैवलरी, भारतीय सेना की 61st कैवलरी रेजिमेंट के सवार वहां अपने घोड़े को तैयार कर रहे हैं। बाईं तरफ एक आपके सामने विशेष घुड़सवारी का प्रदर्शन होगा मैच के बाद। लेकिन अब सहारा वॉरियर्स के पास बॉल है। क्रिस मैकेंजी एक बार फिर कितनी खूबी के साथ अपने घोड़े को घुमा लेते हैं, पूरा बैलेंस, पूरा संतुलन बना के। क्रिस मैकेंजी उनको मार्क कर रहे सिद्धांत शर्मा, लेकिन क्रिस मैकेंजी ने एक बार फिर लीन आउट करके शॉट लगाई है। वहां पे बॉल दाहिनी तरफ से बैक लाइन को पार करके मैदान से बाहर जा चुकी है। खेल की शुरुआत एक बार फिर हिटिंग के साथ होगी। जब भी बॉल बैक लाइन को क्रॉस करके बाहर जाती है तो हिटिंग के साथ खेल शुरू होता है। और ग्रैंड स्टैंड के दोनों तरफ ये जो जायंट स्क्रीन लगे हुए हैं, यहां पे आप क्लोजअप देख सकते हैं। नवीन जिंदल को मार्क कर रहे हैं विश्वरूप बजाज।
स्ट्राइक लगाई, बॉल स्लो डाउन हो रही है और डैनियल ऑटोमेंडी ने बॉल को पकड़ लिया। डैनियल ऑटोमेंडी के पास मौका, डैनियल को मार्क कर रहे सिमरन शेरगिल। सिमरन ने डैनियल को बॉल से दूर रखा, बैकहैंडर की पूरी कोशिश, कट बैकहैंडर के साथ दिशा को बदला और यहां पे एक बार फिर क्रिस मैकेंजी, देखिए किस खूबी के साथ क्रिस मैकेंजी ने बॉल को उठा लिया है। क्रिस मैकेंजी अब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको मार्क कर रहे सिद्धांत शर्मा। सिद्धांत शर्मा के पास मौका, यहां पे उन्होंने पास दिया मराम्बियो को और एक बार फिर हूर अली ने बैकहैंडर के साथ सहारा वॉरियर्स को एक मौका दिया है। बॉल है, डैनियल ऑटोमेंडी ने बॉल की तरफ आगे तो बढ़े लेकिन वहां पे कुछ हरकत हुई और अंपायर ने फाउल का संकेत दिया और इसी के साथ पेनल्टी, सहारा वॉरियर्स के लिए एक पेनल्टी दी गई है। चालीस गज पे बॉल को तैयार किया है क्रिस मैकेंजी ने। ये अनडिफेंडेड पेनल्टी होती है लेकिन जैसे ही क्रिस मैकेंजी बॉल को मारेंगे तो एक डिफेंडिंग प्लेयर को इजाजत होती है कि मैदान में आके बॉल को रोकने की कोशिश करे। अब आप सोचिए आधे सेकंड से भी कम समय होता है लेकिन क्या कोई ये कोशिश करेंगे क्रिस मैकेंजी? और बहुत ही आसान रूप से क्रिस मैकेंजी ने पेनल्टी को दागा और इसी के साथ छठा गोल स्कोरबोर्ड पर सहारा वॉरियर्स के खाते में। दोनों ही टीम्स एक बार फिर मैदान के बीचों बीच में जो रेखा बनी हुई है उस पर आ रहे हैं अपने अपने स्थान पर तैनात होने के लिए। डैनियल ऑटोमेंडी और क्रिस मैकेंजी ने बॉल को फिर से आगे बढ़ा दिया। डैनियल ऑटोमेंडी को मार्क कर रहे हैं सांतियागो मराम्बियो। ऑटोमेंडी के पास बॉल है, बॉल पीछे छूट गई और बैकहैंडर लगा दिया सिद्धांत शर्मा ने लेकिन बॉल ने डिफ्लेक्शन दिया। बैक लाइन के ठीक बगल में है बॉल, इसी के साथ बैक लाइन के पार हुई और हिटिंग के साथ प्ले शुरू होगा। सांतियागो मराम्बियो सांतियागो को मार्क कर रहे हैं। डैनियल ऑटोमेंडी बिल्कुल उनको स्पेस नहीं दे रहे। सांतियागो के पास बॉल है, सांतियागो साइड बोर्ड के बिल्कुल करीब है। दोस्तों अपनी नजर दागे रखिएगा प्ले पर, जब भी प्ले मैदान से ग्रैंडस्टैंड की तरफ आता है। और ये देखिए किस तरीके से सहारा वॉरियर्स के क्रिस मैकेंजी ने बॉल को पकड़ लिया। क्रिस मैकेंजी के पास बॉल है, बैकहैंडर के लिए तैयार है, बैकहैंडर के साथ बॉल को गोल की तरफ बढ़ाया लेकिन बॉल एक बार फिर बैकलाइन के पार हुई और इसी के साथ स्कोरबोर्ड अभी भी 4 के मुकाबले 6 गोल के साथ सहारा वॉरियर अभी इस मैच में आगे चल रहे हैं। और बहुत ही लंबी शॉट लगाई है वहां पे सिद्धांत शर्मा ने बॉल को आगे बढ़ाया सांतियागो की तरफ लेकिन क्रिस मैकेंजी ने एक बार फिर बॉल को पकड़ लिया है। क्रिस मैकेंजी स्ट्राइक्स, चांस है फॉर सहारा वॉरियर्स और इसी के साथ 7वां गोल स्कोर कर दिया है डैनियल ऑटोमेंडी ने। तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक लेंगे 3 मिनट का, उसी के बाद इस मैच का आखिरी और अंतिम चक्कर, छठा चक्कर शुरू होगा 3 मिनट की ब्रेक के बाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें सहारा वॉरियर्स। साउंड कंट्रोल, म्यूजिक हल्का करो।
So ladies and gentlemen, we would now like to present an award for the most enthusiastic spectator. I'd like to request Miss Meenu Jindal. Ladies and gentlemen, I am with Miss Meenu Jindal, who's a very, very accomplished business person, philanthropist, social activist. If I go through her profile and biodata, it's going to take me 2.5 hours. Please excuse me, ma'am. We know it. You're such an inspiring person. We'd like you to present the award for the most enthusiastic spectator, and here he comes. Young man, please speak your name loud and clear. धर्म खन्ना ऐसे करते हैं cheering. जोरदार से तालियां बजा दो. Well done. Okay, the question which I asked was, who is the youngest player in action on the field? Youngest player in action on the field. एक बार फिर पूछ लो. Answer बता दो. 16 years 16 years old, Vishwaroop Bajaj. Ladies and gentlemen, Vishwaroop Bajaj is playing at number 1 for the Sahara Warriors team. He's the youngest player ever to have played in the finals of the Indian Open. He's 16 years old, in class 11th, not old enough to get a driving license, but he's galloping these horses. Dhav Khanna, ये छोटा सा प्राइज आपके लिए, छोटा सा. हाँ, फोटो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर फोटो नहीं ली गई तो हुआ ही नहीं था. Okay, we've got two highly anticipated awards for the best dressed lady and the best dressed gentleman. We're going to give these awards after the end of the 6th chakra. Right? Yeah. May I have your permission to resume? Thank you. I'm grateful. Hey folks, please don't look at me so seriously. You're making me nervous here. Sir, there's a complaint which I'd like to lodge. There used to be a time when spectators used to be relaxed at the Jaipur Polo ground. They used to have fun. Most of these guys are looking like they're preparing for the board exam. What's going on here? अरे यार ये मेरे को कैद कर दिया एक मिनट. Who has come? Okay, a long whistle right at the start of the 6th chakra. बेस्ट ड्रेस फीमेल को ऑलरेडी बता देती हूँ. बेस्ट ड्रेस मेल तो वहीं पीछे बैठे हैं. Chris Mackenzie strikes for Sahara Warriors. Sahara leading with 7 goals to 4. Oh, look at that bump coming from Daniel Otamendi. Santiago Marambio picks up the ball for Jindal Panther. Jindal Panther will have to really press on the accelerator and get back into this match. It is Santiago Marambio now. Santiago asking his players to move up. What a lovely strike. He gives a pass to Siddhant Sharma. Siddhant trying to take the ball away from Hoor. And it is Hoor Ali. Hoor with a backhander. With what a well-timed, well-directioned backhander. It's Chris Mackenzie who's picked up the ball for Sahara Warriors. It's Chris Mackenzie now with a backhander.
He strikes and he has scored goal number 8. Ladies and gentlemen, that was a very easy move by Chris Mackenzie. He was riding a 600 kilo horse, moving at 40 feet per second, leading out 45 degrees to his left and hitting a backhander 45 degrees to his right. So can we please have a louder round of applause? Thank you. What a responsive crowd. आपने तो मुझे भावुक कर दिया. और ये देखिए 5.5 मिनट का वक्त बाकी है और अंपायर ने एक बार फिर सीटी से संकेत दिया. 8 गोल्स के साथ सहारा वॉरियर्स की टीम इस मैच में अपनी पकड़ और तेज बनाई हुई है. अभी देखना है अंपायर क्या निर्णय देते हैं. एक स्पॉट हिट दिया है उन्होंने जिंदल पैंथर को. सिद्धांत शर्मा बॉल को टी अप कर रहे हैं. जिंदल पैंथर के लिए नंबर 1 पोजीशन पे अब अक्षय मलिक आ चुके हैं. 2 सब्स्टिट्यूट जिंदल पैंथर के लिए. सिद्धांत शर्मा ने ऊंची शॉट लगाई. बॉल अब सांतियागो मरांबियो के पास है. सांतियागो ने बॉल को स्ट्राइक किया. मैदान के ठीक बीचों बीच बॉल आगे बढ़ चली है और वहां पे मौका था सिमरन शेरगिल को. मार किया था. देखिए बैकहैंडर के साथ एक बार फिर क्रिस मैकेंजी ने पास दिया. हूर अली, हूर के बगल में सांतियागो मरांबियो ने घुमा लिया बॉल को अपनी बाईं तरफ. मरांबियो अटैक कर रहे जिंदल पैंथर के लिए. एक बार फिर मौका है. सांतियागो मरांबियो 10 गज का फासला. सांतियागो मरांबियो ने बॉल को टैप किया बैकहैंडर के साथ. हूर ने एक बार फिर बचा लिया और सिद्धांत शर्मा के पास बॉल है और इस बार विश्वरूप बजाज एक बार फिर बैकहैंडर लगाए सिद्धांत ने और सांतियागो ने पूरी कोशिश कर रहे जिंदल पैंथर की टीम. मौका है यहां पे. बॉल बढ़ चली है गोल की तरफ और इसी के साथ 5वां गोल स्कोर किया सिद्धांत शर्मा ने जिंदल पैंथर के लिए. 4.5 मिनट्स का वक्त बाकी है दोस्तों. सवाल मन में यह उठता है जिंदल पैंथर की टीम क्या 3 गोल कर पाएगी? अगर दोनों टीम्स बराबरी के स्कोर में हुए जब छठा चक्कर खत्म होता है, अगर दोनों टीम्स टाई पोजीशन में है, बराबरी के स्कोर पे है, तो फिर मैच एक्स्ट्रा टाइम में बढ़ चलेगा और एक्स्ट्रा टाइम में यानी 7वें चक्कर में गोल्डन गोल रूल अप्लाई होता है. और ये देखिए विश्वरूप बजाज ने करारी शॉट के साथ बॉल को आगे बढ़ा दिया सफदरजंग एयरपोर्ट की तरफ. विश्वरूप बजाज की स्ट्राइक. ओ माय विश्वरूप बजाज की जो स्ट्राइक थी बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ इन्होंने लगाई. मेरे ख्याल अपने जीवन का सबसे लंबा स्ट्राइक था ये इनका. आज तक इनको 100 गज की शॉट मारते हुए देखा नहीं. लोगों कितनी खुशी की बात है भारत के पोलो समुदाय के लिए कि एक 16 साल का युवा बालक विद्यार्थी इतनी अच्छी पोलो खेल रहा है. हूर और सिमरन के बीच में मुठभेड़ जारी है. अब सिद्धांत शर्मा को मार्क कर रहे थे वहां क्रिस मैकेंजी. बॉल पीछे छूट गई है. पीछे से आ रहे सांतियागो मरांबियो और अक्षय मलिक और बैकहैंडर लगा दिया है. एक बार फिर विश्वरूप बजाज ने बैकहैंडर लगा के दिशा को बदला. सिमरन के पास बॉल और अब की बार फिर विश्वरूप बजाज ने बॉल को उठा लिया है. सहारा वॉरियर्स के देखिए एक बार फिर उन्होंने बहुत ही लंबी स्ट्राइक मारी लेकिन बॉल बाईं तरफ चली गई और मैदान के बाहर. इसी के साथ फ्री हिट मिली है जिंदल पैंथर को. लेकिन जब बॉल मैदान से बाहर जाती है अब अंपायर ने विसल के साथ संकेत दिया है. प्लेयर्स को मौका दिया है एक बार फिर नए ताजे घोड़ों के साथ मैदान में वापस आए. 2 मिनट 47 सेकंड का समय बाकी है दोस्तों. जिंदल पैंथर को यहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच में. अगर उन्होंने अपना दावा जीवित रखना है तो 3 गोल बहुत जल्द स्कोर करने पड़ेंगे. 2 मिनट 47 सेकंड का समय बाकी है. minutes and 47 seconds left. एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे ही छठा चक्कर समाप्त होगा या तो मैच समाप्त होगा या मैच एक्स्ट्रा टाइम में बढ़ चलेगा. लेकिन छठे चक्कर की समाप्ति पर
हम 2 विशेष पुरस्कार देंगे। Okay, that is very nice support for Sahara Warriors. One spectator clapping. या थोड़ी hint ले लो. Ladies and gentlemen, this is the time that we need some loud cheering for Jindal Panther to show their magic and get back into this game. Come on. Once again, Chris McKenzie brings the ball close to the grandstand. They're coming right in front of you. Come on, get vocal. Cheer them. This is Chris McKenzie striking. Look at that horse responding. What acceleration, what deceleration. Chris McKenzie strike, but the ball is going wide. It's racing towards the back line and the ball goes past the back line. That's going to be a hit from the back line. Just about 2 minutes of play left. Jindal Panther will now be challenged by the clock. As the clock is ticking by, they are running out of time to score 3 goals. Simran right in front. Simran strikes. It's a beautiful pass by Simran Shergill to Santiago. The ball right in the center, and Hoor Ali defends with a backhander. Okay, some emotional calls from the players. A penalty against Jindal Panther, and the ball is being taken to the 60-yard mark by the 2 umpires, Mr. Ben Turner and Henry Fisher. (60-yard penalty in favor of Sahara Warriors. The clock will begin as soon as Chris McKenzie takes that strike. Oh, that's a mistimed stroke, a rare occurrence with Chris McKenzie, a backhander struck by Vishwaroop Bajaj. He's brought the ball right in front of the goal mouth. But we have Siddhant Sharma. Siddhant strikes. It's a nice pass. We have 2 players of Jindal Panther right there. Simran Shergill ने बॉल को पकड़ लिया है. Simran Shergill पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उनके ठीक पीछे अक्षय मलिक. लेकिन देखिए किस तरीके से क्रिस मैकेंजी ने बैकहैंडर टेल शॉट के साथ बॉल को 90 डिग्री के एंगल से बदल के दूसरी तरफ पहुंचा दिया. और अब सहारा वॉरियर्स की टीम एक बार फिर बॉल को इस बार बैकहैंडर के सहारे आगे बढ़ा है. सिमरन शेरगिल ने बॉल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां डैनियल ऑटोमेंडी ने आके बॉल को पोजीशन में दिया. डैनियल ऑटोमेंडी बॉल को संभाल के ग्रैंड स्टैंड की तरफ मारा बॉल को. सभी प्लेयर्स सामने आ रहे. जोरदार तालियां हो जाए. देखिए किस तरीके से हूर अली और सिद्धांत शर्मा के बीच में हूर अली पूरी कोशिश कर रहे बैकहैंडर की. सांतियागो मरांडियो, come on ladies and gentlemen, they're right in front of you. Cheer for them. Come on, let's get moving. 30 seconds of play left. Siddhant Sharma trying his best, keeping Daniel Otamendi away from the center line. Daniel Otamendi strikes and the ball has gone over the back line. It is going to be a race against time. Sahara Warriors in the lead with 8 goals to 5. And the laws of physics and time coming into play now. Well, ladies and gentlemen, that is the final hooter to mark 125 years of the Indian National Polo Championship. Jindal Steel Indian Open Polo Championship 2024, won by Sahara Warriors, beating Jindal Panther 8 goals to 5.
I'd like to inform all the spectators and request you all to please remain seated. We're just waiting for the victorious team to give a victory lap, and soon thereafter we'll be having a very special riding demonstration by the 61st Cavalry. Okay. We're just waiting for the players to come and ride past the grandstand. Let's wait for that. Victory lap. Ladies and gentlemen, the players of the Jindal Panther team looking despondent and disheartened after this performance, but I'd like to request all spectators, please give a big round of applause to Jindal Panther for giving us such a fine display of their competitive polo. All right, ladies and gentlemen, here they come from your left to right in the white shirts. We have the warriors of the Sahara Warriors Polo team. Let's give a big round of applause. To begin with, the youngest player to have ever taken part in the finals of the Indian Open, Vishwarup Bajaj. The rising star of Indian Polo, Hoor Ali. Daniel Otamendi, and the star player, Chris McKenzie. Okay, I have a very special file with me. It's a highly confidential document. Am I allowed? Okay. I've taken due permission to announce the winner of the best dressed lady, and I'd like to request Ms. Deepika. Ms. Deepika, could you please present this award? So, ladies and gentlemen, the best dressed lady this afternoon, Deepika ji is going to present this award, and this award goes to Ms. Priyanka Thukral Arora. Priyanka Thukral Arora. Ma'am, you're sure you are Priyanka Thukral Arora? I hope you're carrying your Aadhaar card with you. Congratulations. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for the best dressed lady this afternoon. Ms. Subhadra is going to give the next award. Subhadra ji, we request you to give the award for the best dressed gentleman. Ladies and gentlemen, there was a very strict jury who went through a long checklist and finally concluded the name of the winner of the best dressed gentleman this afternoon, and this award goes to His Excellency Mr. Juan Angulo, the Ambassador of Chile. Yes, it's you. Ladies and gentlemen, the most unassuming person carrying his ID also. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, our special demonstration by the 61st Cavalry is going to start now. Look towards your extreme left, and you can see the flag of the Risala
entering the field from your extreme left. I'm standing here before you because I don't have a seat. You see, this is election season. All seats are in great demand. यहाँ न तो टिकट मिल रहा है आजकल, न कुर्सी मिल रही है. वो देखिए दोस्तों, आपकी बाईं तरफ रिसाला का ध्वज तैयार है और अब मैदान में आपके सामने आने वाले हैं रिसाला के जोधा सवार विश्व की एकमात्र एक्टिव कैवलरी रेजिमेंट 61st कैवलरी. और ये वो रेजिमेंट है जो 26 जनवरी की परेड में, जिसका at the Republic Day Parade of India is doing the 61st Cavalry. Always since the very first day, this is Dafadar Taveen Jagtap astride Thor, coming with the flag of the Risala for the cavalry compliments, being followed by Lance Dafadar, Ganesh Wankhade and Lucky Boy, Lance Dafadar, Akram Khan and Lovely Boy. Looks really easy, huh? Very easy. Just don't try it during this lifetime. Ladies and gentlemen, we have the Ground Marshal, Sawar Dipinder Singh, who is ready with the red flag in the center of the field. We now have a demonstration of lance and peg. If you look towards your left side, there's a stand which is being placed on the ground, and a lance has been placed on that stand. So the rider is going to come at a flat-out gallop, and he will attempt to first pick up the lance while the horse is moving at 40 feet per second, and then try and pierce the peg in front of you. As if in approval of the proceedings here at the Jaipur Polo ground. What confidence there! That was Lance Dafadar Ganesh Bhonge astride Al Fateh. दोस्तों, अब जो डिस्प्ले आपके सामने होने वाला है